श्रुतेन यमवेश वृणुते तेन लभ्यस्तस्येष आत्मा विवृणुते तनुं स्वाम् उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान् निबोधत शुभस्य धारा निशिता दुरत्यया दुर्गं पथस्त कवयो वदन्ति ॐ सत्यं ज्ञानं ज्योतिररविन्द ॐ सत्यं ज्ञानं शरणं वीरा शरणं वीरा मम शरणम्
A very warm welcome to everyone on this auspicious, wonderful and beautiful day that brings together so many special people like you. Well, my first and foremost duty on behalf of the Principal Mrs. Chinmay and educators of Aurovia Center of Education to welcome you all here. We are profusely elated to take an opportunity to introduce and all the staff members. We thank you for providing your precious presence. Dipti, do you know why are we observing the 24th November as a special day? Sri Aurobindo said 24th November was the descent of Krishna into the physical. It is also called the day of victory. What he said was that the divine had come into the material. It was also proclaimed that he was retiring, obviously to work things out. To invite Mrs. Mukta ji onto the dais to welcome all on this graceful day. Mukta ji. श्रीमान श्रीविन के सभी बालक बालिकाओं का हार्दिक अभिनंदन और आपको बहुत बहुत मुबारक है इस शुभ दिन की। सिद्धि डे, जैसा कि मैम ने बताया कि ये है विक्ट्री डे। आप सबने मेरा कितनी बार पढ़ा होगा कि हम ये क्यों मनाते हैं सिद्धि दिवस। आज से 95 ईयर्स बिफोर 24 नवंबर 1926 को कृष्ण चेतना का भौतिक में अवतरण, श्री अरविंद में अवतरण, उनका एक साथ हो जाना, तो ये एक सीढ़ी शुरू हुई है हमारे लिए। उन्होंने इतना प्रयास किया है हमारे लिए कि हम चेतना के आगे स्तरों पे ऊपर जा सकें। मैंने माँ को सारा कार्य दे दिया, ये सारा आश्रम का, डिसाइपल्स का, उनके रोज का काम काज का, उनकी साधना का जिम्मा भी माँ के पास आया, क्योंकि श्रीविंद ने और गहरी साधना में जाना। तो वो हमारे लिए इतना प्रयास किया कर रहे थे ना, शरीर भी जल्दी इसीलिए छोड़ा कि सूक्ष्म जगत में वो आगे का कार्य कर सके। तभी तो माँ ने 29 फरवरी 1956 को अगली सीढ़ी हमारे लिए लाई हो, सुप्रामेंटल का डिसेंट हुआ। तो साधना कर रहे होंगे अपने अपने घरों में, अपने अपने इष्ट को साधना कर रहे हैं, परंतु अब कलेक्टिवली करते हैं तो ये हम सबकी मिलके जो पुकार है और ऊपर तक जाती है। ये हमारा प्रयास रहना चाहिए कि अगर श्रीविंद ने कहा तब कि हमारा एकमात्र आदर्श है दिव्य शरीर में दिव्य जीवन, तो दिव्य कैसे बनेगा? दिव्य तभी होगा जब तन मन प्राण आत्मा सबकी साधना होगी। तो हमारे लिए ये साधना करेंगे कलेक्टिवली, और जो श्रीमान श्रीविंद ने हमारे लिए इतनी मेहनत करी, इतना कार्य किया है, तो उसमें हम योगदान दे सकें। नहीं तो माँ की प्रार्थना आपको सुनी होगी, माँ ने कहा है कि मेन कंट्रीज कॉन्टिनेंट्स, अगर आप नहीं चुनोगे, कोलैबोरेट करोगे, तो इधर कोलैबोरेट करोगे तो हाइट, नहीं तो एबिस। तो हम लोगों को कोलैबोरेट करना है, और आज ये हम सब कलेक्टिवली करें, ये प्रेयर करें, ग्लोरी टू दी ओ लॉर्ड, सुप्रीम मास्टर ऑफ आल रियलाइजेशन, गिव अस ए फेथ एक्टिव एंड आर्डेंट, एब्सोल्यूट एंड अनशेकेबल इन दाई विक्ट्री। आज विक्ट्री डे है, तो वो विक्ट्री में हम शामिल हो सकें, यही हमारी प्रार्थना है। फिर से आपका हार्दिक अभिनंदन, बहुत बहुत बधाई। Beyond words, above thoughts, the flame of an intense aspiration must always burn, steady and bright. Now, we are going to show PPT and we request respected Pawan sir to throw some light on aspiration. Aspiration, अभिप्सा, मानवीय जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि और मानवीय जीवन का सबसे बड़ा संघर्ष और मानवीय जीवन की सबसे बड़ी सद्भावना
मानवीय जीवन की सबसे बड़ा आरोहण वो है हमारे मन, प्राण और शरीर और आत्मा की निरंतर ज्योतिर्पुंज जो उस भगवान की और धीरे धीरे जो है वो लौ भगवान की ओर चलती है, वो हमारी अभिप्सा बनती है। हम अपने जीवन को आकर निवेदित करते हैं, हम अपने जीवन का समर्पण करते हैं उस लौ के प्रति, उस प्रेम के प्रति, उस अभिप्सा की अग्नि के प्रति, ताकि हमारा जो है सर्वस्व उस परमात्मा के प्रति अर्पित हो सके, हमारा जीवन धन्य हो सके, हमारे जीवन का उद्देश्य जो है उसको हम पा सकें अपने जीवन को, और सदा ही जो उस परमात्मा ने अपना सच्चित आनंद का जो स्वरूप है उसको हम जीवन में उतार सकें। ऐसी अभिप्सा, ऐसी पुकार, ऐसी उत्कंठा, ऐसी व्याकुलता जो आज का विषय है, उसके बारे में हम आज कुछ शब्दों में, कुछ वाक्यों के माध्यम से, और लेकिन उससे भी ज़्यादा जो है, शब्दों से भी ज़्यादा जो है, वो हमारी अंदर की ऊर्जा, हमारे अंदर की ग्रहणशीलता, और इस मौके पे इस समय बैठे हुए हम केवल उस लौ को ही महसूस कर सकें, ऐसी प्रार्थना के साथ मैं आज ये शुरू करने जा रहा हूँ। सबसे पहले ये जगह जो है बहुत लोगों का अनुभव रहा है, हम सब लोगों का अनुभव रहा है कि ये जगह जो है हमारी नहीं है, ये माँ श्री अरविंद की साधना स्थली है, और बहुत लोगों ने माँ की प्रेजेंस को यहाँ पर अनुभूत किया है। सो फर्स्ट we invoke her presence. She is the golden bridge, the wonderful fire, the luminous heart of the unknown is she. A bar of silence in the depths of God. She is the force, eats from the unrealized vast, the joy that beckons from the impossible, the might of all that has not yet come down. And to be that is perfect. This is always an instruction which Mother gave. These 3 lines, they are very powerful lines. Mother used to say, my words are not words, they are direct action from the Supreme, because she was always linked with the source of the Supreme. So that's why every word she uttered had that force, that power. So these 3 lines are very, very powerful lines. Word, steady and bright. 3 words have been used in this sentence, as your words can be in formation of this aspiration. You may silently form it, you may use words to form it, and you may, which has no wall between our thoughts, our emotions. And when that happens in our being, whether in meditation, whether in mantra japa, whether in Simran, whether in enlightenment happens, so that is the area where automatically our aspiration starts. That's an area where you, very different kind of intensity, a very different kind of wideness, a very different kind of potency, a very different kind of power. So these words and beyond thoughts, above thoughts, the flame of an intense aspiration must always burn steady and bright, must always teaching or your learning or anything in your life. These 2 things have to be there always. It has to be constant and consistent. Nothing can disturb it. No bar, no deviation can disturb it. That is why it has to be very, very consistent and constant.
with all science is trying to search it through its invention, through its discoveries with matter, trying to understand what life and consciousness in the laboratory of their own soul, they have tried to search it. The socialist, the artist, and many other forms of expressions of life that they can experience in their own psyche. So this is a different kind of purpose of life. But there is an underlying thread. Underlying thread behind all purpose of life is what is that this purpose must give delight to us, bliss to us, power to us. Why we search for it? Because it allows us to be in rhythm with that search, and through that search we become powerful because we want to control the things totally in moments when our inner lamps are lit, life's cherished guests are left outside. When all our leanings towards life, our involvement in life, when you get frustrated because it's very temporary, you have a month of joy and then again the sorrow, because earth's pleasures, they depend upon sorrow. They have to be followed by sorrow. So everything we search, trying to search it out has its limitation. So when we get frustrated and find that limitation, that all the pleasure of life are temporary, so automatically our gaze turns inside. When we get into insights, we understand the basic ethos of that reaching out to outside life. And then what happens is that our relationship with life becomes very, very meaningful, because now it is stationed inside. And then you start moving from inside to outside. So that is our purpose. Our purpose is why Divine wanted to have created this life. Divine has given a holocaust to us. Divine has sacrificed to us so much. आप सोच के देखिए, कभी भी जिस दिन ये एहसास हो जाए आपके अंदर कि परमात्मा ने हमें आत्मा के रूप में, हमें साइकिक बीइंग के रूप में, हमें जीवात्मा के रूप में जो है वो हमें अपने अंदर खुद विद्यमान हो गए, हमारे अंदर बैठ कर आ गए, और देखिए हमारे जीवन की सारी स्टेबिलिटी वो सहन करते हैं। हमारी आत्मा जो है, जो भी कुछ हम करते हैं शरीर के साथ, मन के साथ, हमारे हृदय के साथ जो है, जितना कुछ हम करते हैं वो सारा सहन करती रहती है चुपचाप, आपको कभी कुछ नहीं कहती। कभी कभी हल्का सा सर उठा के कहती है, देखती है आपको कि शायद ये दिन मुझे पहचान लेगा, लेकिन हम पहचान लेंगे। इतने समय तक वो इंतजार करती है। इसका मतलब क्या हुआ? तो वो परमात्मा जो है वो कितना करुणामयी है, वो कितना करुणामयी है कि हमारे अंदर बैठकर हमारी सारी नॉनसेंस वो टॉलरेट करता है। सिर्फ इस उम्मीद में, जैसे एक माँ उम्मीद करती है एक बच्चे से, इस उम्मीद में कि कभी ना कभी तो ये बच्चा जो है वो मुझे पहचानेगा, अपनी माँ को पहचानेगा। फिर परमात्मा के पास एक ही हथियार है। वो क्या? वो हथियार है वो हमारे लिए, हमें याद कराने के लिए, हमारी प्रकृति को तोड़ने के लिए जो है क्या करता है, हमारे लिए कभी कभी पेन क्रिएट करता है। ओनली पर्पस ऑफ पेन इज कि हमारी तमस को किस तरह से तोड़ा जाए कभी कभी। और उस समय जब हमारी तमस टूटती है तो हमें बहुत दुख होता है कि परमात्मा क्यों हमें तकलीफ। उसके पास एक ही हथियार है, जब भी हम दर्द को हिलाते हैं तो तकलीफ होती है, इसलिए जो है हमारे जीवन में तकलीफ आती है और हम उसको ब्लेम परमात्मा को करते रहते हैं कि परमात्मा जो है। इसलिए जितनी जल्दी हो सके, जितना हो सके, और ये अभिप्सा जो है एक ऐसा सुंदर टूल है, एक ऐसा यंत्र है जिसके माध्यम से हम अपनी आत्मा को पहचान सकते हैं। ये परमात्मा आज के बाद में तुम्हारा आत्मा। मैंने जो भी कुछ अपने जीवन में गलतियां की, जो भी कुछ मैंने अपने रस रंग किए अपने जीवन के, मैं अब बहुत थक गया हूँ, अब मैं तुम्हारी शरण में आना चाहता हूँ। और जिस दिन हमारे ये शब्द हमारे अंदर से हमारी आत्मा के लिए निकलते हैं, उस दिन से ही हमारा जो है हमारी अभिप्सा
शुरू होती है और उसी दिन से हम अपने जीवन के लक्ष्य की ओर बढ़ना शुरू कर देते हैं। वो it may not be defined very clearly to us, it may be a little vague in the beginning, but gradually फिर जो है it becomes very clear to us, okay, now my purpose of life is to experience myself, experience my soul, experience my psychic being, experience the divine in me. So that is the purpose of humanity. Okay, all these three things ultimately is nothing else but a search for Sat Chit Anand, and in that minuscule form, our soul, search for our soul. And once it happens, so natural flow of compassion and love and truth, it starts flowing outside, and ultimately humanity becomes our mirror. And we start to see the other souls. So therefore my natural love for the humanity happens. What is aspiration? Aspiration, united your hearts, common to you with your mind, so that close companionship may be yours. If our mind only wants it, in the beginning mind wants most of the time. And some in the emotions wants it, that I want to be like God. I want to be like that. I establish my ideals. Normally ideals of life, they happen in the mind itself. So my thoughts are linked. To use the body for reception. Both my mind and my emotions have to carry the body with this. So therefore the consent of the body is also so important. Many times you want to get up in the morning at 3 o'clock or 4 o'clock. ये सारी उम्र जो है आपकी दोस्त बन गई है। Seedbed of aspiration. Multiply करना चाहा, अपने ही आकृति को, अपनी ही चेतना को जो है भिन्न रूपों में देखना चाहा, तो दैट वो लीला करनी चाहिए उसमें। तब सुपरमेंटल कॉन्शियसनेस ने शक्ति को बुलावा दिया, क्योंकि जो भी जैसे साइंस कहती है कि एवरीथिंग इन द यूनिवर्स, परमात्मा पुरुष में सारी प्रकृति को सपोर्ट करता रहा, जिसको हम ईश्वर और देवी भी बोलते हैं और शिव और पार्वती भी बोलते हैं। तो कितनी करुणा रही परमात्मा के मन में कि उन्होंने जो है खुद अपने आप को देखिए, अपने आप को तटस्थ रखकर, अपने आप को प्रकृति को सपोर्ट करके इस सारी सृष्टि का सृजन किया और सारी अपनी सच्चित आनंद की चेतना को जो है प्रकृति को सौंपा और धीरे धीरे करके जो है नई हमारे तक आने में जो है उनकी जो ओरिजिनल सच्चित आनंद था वो फॉल्सहुड में बदल गया, इग्नोरेंस में बदल गया। तो इस तरह से जो है जब हम तक पहुंचा और हम जो है we always carry that and that seed of ignorance in us. So there is a truth in us, there is a luminosity in us, there is a knowledge in us, but it is lying latent in our inconscient, हमारी जड़ता में पड़ी हैं सारी चीज़ें। ट्रूथ हमारे सामने भी आता है, तब भी जो है हम उसको देखने से इनकार कर देते हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम वी लिव इन इग्नोरेंस। सो आवर पर्पस इज, तो परमात्मा ने जो है तो हमारे साथ इतनी करुणा की है। नाउ द टाइम हैज कम, थ्रू आवर एस्पिरेशन वी रिटर्न एंड वी गो बैक to that source which is lying within us and which can be outside of us also. But once you encounter it within yourself, then only you can feel it and find it outside. Otherwise, it's not visible to us. This is the thing which is very subtle. All victories, all beautiful things of life are very intangible. जो सारी ऊंचाई पर ऊपर जाने लग जाती है। इसलिए माँ ने हमेशा कहा था कि concentrate in your heart. Concentrate in your heart, concentrate in your heart, I am there. किसी ने पूछा कैसे देखें माँ? उसने कहा कि थोड़ा सा 2 इंच ऊपर जो है ध्यान करके देखो, मैं वहाँ पर हूँ, मेरी चेतना जो है वहाँ पर है, हृदय के अंदर जो है। तो इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल एक्सरसाइज कि जब भी जो है आप ध्यान में बैठें तो अपने हृदय की ओर जो है आपका ध्यान जो है स्वतः ही आपके हृदय की तरफ जाएगा, बिकॉज इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल। और दूसरी
बात जो है, जो हमारा हृदय है वो हमारी इमोशन, सेंटिमेंट्स और फीलिंग का सीन है। तो ऑल थ्री आर एनर्जी। मेरी इमोशंस किसी तरह भी हो गई, भगवान के लिए हो गई, मनुष्य के लिए हो गई, इट्स एनर्जी एंड वी कैन सेक्रीफाइस एनीथिंग इन द फ्लो ऑफ दैट एनर्जी। फीलिंग्स हमारी आ गई किसी के प्रति, किसी तरह की, माँ के प्रति आ गई, किसी के प्रति आ गई, सो वी कैन डिवोट एंड डायरेक्ट आवर एनर्जी टुवर्ड्स दैट। इमोशंस, फीलिंग और सेंटिमेंट्स की एक सीट है बहुत सुंदर। तो इसको जितना प्योरीफाई करेंगे, जितना इस पर कॉन्सेंट्रेट करेंगे हम, जितनी हम इसको पुकार करेंगे, तो ये हमारे लिए एक बहुत सुंदर टूल बन सकता है हमारी चैत्य सत्ता को पाने के लिए, हमारी आत्मा को पाने के लिए। क्योंकि हमारे शास्त्रों में लिखा है कि अंगुष्ठ मात्र होकर आत्मा जो है हृदय के बीच में पीछे बैठी है। उसको बाहर के हृदय को जब हम ढूंढने की कोशिश करेंगे इमोशंस के माध्यम से, धीरे धीरे करके इट्स पॉसिबल कि हमारे अंदर से भी, अगर हमारा हृदय प्योर होता है तो हमारे अंदर से भी हम अपने चैत्य पुरुष के साथ, शुरू में जब लॉ जलती है तो बड़ी धीमी होती है और फिर जो है उस पर बड़े अटैक भी होते हैं। जब भी आप कोई नया काम करने जाते हो तो उसका विरोध होता है हमेशा। इसी तरह से जब हम अपने जीवन में इस लॉ की तरफ आगे बढ़ते हैं तो ऑल फोर्सेस which doesn't allow that law to, that flame to come forward, तो वो उसके ऊपर अटैक करते हैं। So therefore we have to create a fence around it, we have to protect it। बोगनविलिया के फूल को जो हमारे प्रोटेक्शन का नाम दिया है, तो we have to protect it और जो है इसको काट। It is a state where one is moving upwards towards divine, urge to serve and urge to progress is a sign that aspiration is going to the full world। मन में आती है, यहाँ से यहाँ आती है, 6 inch above the head, यहाँ पर आती है। We want to serve। जो तीनों प्लेन, तीनों ही हमारे जो प्लेन हैं वो अल्टीमेटली जो दे आर टूल्स, यहाँ पर ही किसी न किसी रूप में जो है ये कब कैसे होती है, कैसे बड़ी लॉन्ग चैप्टर, तो फिर कभी मौका मिलेगा तो बात करेंगे कैसे मन में आती है, कैसे हृदय में आती है। इट्स ए वेरी लॉन्ग थिंग, लेकिन यहीं से आती है। अलग अलग व्यक्तियों की अलग अलग होती है, इसलिए नो टू पीपल कैन बी कंपेयर्ड। न सभी आपको दीक्षा दे जाए, सब हम यहीं बैठे बैठे अभी सबको एक मंत्र दे रहे हैं, ये मंत्र का जप करो, लेकिन आपकी सभी अनुभूतियाँ जो हैं आपके अपने स्वभाव और स्वधर्म के मुताबिक होंगी। हाँ, जो है जिसमें सात्विकता ज़्यादा है उसकी अनुभूति और होगी, जिसमें राजसिकता ज़्यादा है उसकी अनुभूति और होगी, जिसमें तामसिकता ज़्यादा है उसकी अनुभूति और तरह की होगी। So no two people can be compared, and then we have our souls past। कितने जन्मों की यात्रा है हमारी, अलग अलग डिफरेंट जो एक्सपीरियंसेस हमने किए हैं, तो सब मिलाकर जो है बहुत यूनिक व्यक्ति बनता है। दैट यूनिकनेस, टीचर का भी यही रोल है तो बच्चे की उस यूनिकनेस को पहचाने, और हमारा भी यही रोल है कि हम हर एक व्यक्ति की यूनिकनेस को पहचानें। जैसे ही हम हर एक व्यक्ति की यूनिकनेस को पहचानते हैं उसका बड़ा फायदा रहता है। वी स्टार्ट एक्सेप्टिंग द पर्सन मोर, हम हम्बल बड़े होते हैं बिकॉज वी ट्राई टू अंडरस्टैंड द पर्सन, हमारे रिलेशन इम्प्रूव होते हैं और हमारी जो जीवन के प्रति एक सहजता बनती है। सो दैट इज व्हाट through which he can touch the psyche। हम सब लोग जो हैं तीन गुणों में बरतते हैं, हमारा स्वभाव जो है। जब श्री कृष्ण ने अर्जुन की एक और बड़ी निष्ठा है, और वो निष्ठा है उसकी न्याय के प्रति। और क्षत्रिय जो है जब तक धनुष नहीं उठाता, जब तक वो इस बात को कन्विंस ना हो जाए कि जो है something injustice is happening। But normally what we think about Kshatriya is that he is a man of action। But what is more important is he is not only the man of action, but he has that kind of innate sense of what is wrong। Then only his own personality comes into action once he is convinced that some injustice has happened।
अपने गुण हैं और वो गुण आपने देखा होगा। कोई लेट अस टेक वन एग्जांपल, कोई भी घटना होती है किसी के साथ भी, तो हर एक व्यक्ति अपने अपने गुणों के मुताबिक उसको रिस्पॉन्ड करता है। जो राजसिक व्यक्ति होगा वाई, हाँ, और फिर उसका सोल्यूशन क्या हो सकता है, और वो इफेक्ट इक्वली उसको भी हो रहा है, बट व्हाट इज हिज मोड ऑफ एक्शन इज दैट ही इज ट्राइंग टू यूज हिज विवेक बुद्धि। और तामसिक व्यक्ति होगा, जन्म लेना हो गया, तो ही विल अवॉइड टेकिंग एक्शन। सो आप देखो कि हम सारा दिन जो है, हमारे जितनी भी जीवन की क्रियाएं हैं, वो सारी हमारी गुणों के माध्यम से बदलती हैं, गुणों के माध्यम से, और उसी तरह की चॉइस हम बनाते हैं और फिर कहते हैं कि मैं कर रहा हूँ। It is our gunas who are motivating us inside to take action in life and making choices in life. So therefore, it's very important to understand is these gunas in us. And once we understand that gunas in us, you will find that my possessiveness to मैं करता हूँ, it drops. Or when it starts dropping, then you will understand all my action, even the gunas, they come from the divine. Because you are not attached at that time, you understand that you are not the doer. And therefore, since you are not the doer, your gunas are the doer, you are being used by these forces, innate forces in you, so therefore you feel liberated and you become a witness. When you become a witness, automatically you understand that the origin of the action is coming from further deeper source. So then you have sense of I, sense of me belonging to it, ultimately starts dropping. This is the physical. You may have physical aspiration also, that the body may feel the need to acquire a kind of ego, and that the body may always function normally in perfect way. I'm reading again because I have to rush to it. You may have physical aspiration also, that the body may feel the need to acquire a kind of equipoise in which all the parts of the being will be well balanced, and that you may have the power to hold of illness so that the body may always function normally in perfect health. COVID has given us an opportunity because of its intense magnitude. Let us pray and intensify our aspiration for a purified and a glorified body. Mental. A mental aspiration means that the thought power aspires to have knowledge, clear ideas, logical reasoning. One may aspire for many things, that all the qualities and the capacities of the mind may be developed. Here I would like to mention two particular things. The mind is required for our day-to-day working of this world, but creative and imaginative mind is required to relax and to reach out our highest potential. So there are two ways of reaching out our highest potential. One is through the logic, and second is through the creative impulse. Right? And one aspect which is ignored most of the time is concentration of the mind. The mind has to be concentrated, and that mind, when mind is concentrated, so naturally it is at its best, and concentration is nothing else but squeezing the whole energy and putting in a capsule, so that it can be directed the way you want to direct it. And third aspect of it is the silence of the mind. We never discuss about silence of the mind. No, we don't discuss about the space to be given to the mind between two thoughts. We don't discuss about the space to be given between two emotions and two feelings. So therefore, concentration and silence of the mind need to be discussed in classrooms and in our homes, definitely. So this is mental aspiration. Of depression also, it's a seat of all kinds of actions
and it is the seed of all kinds of sacrifices also. So both swings are there in this aspect. So you can be as enthusiastic as well as depressed as you can be. This is a swing. So vital is, if you have desires and troubles, storms, inner difficulties, you may aspire for peace without any personal whims, always at the divine disposal. This is the vital aspiration. So, yes, because of these associations. So these aspects need a lot of discussions and a lot of understanding, but one thing is there, is जो हमारे पूर्व समय कराते थे बचपन से ही सुंदर कहानियाँ तो हीरो वरियर हमारे अंदर सबके अंदर जो है दो एस्पेक्ट दो चीज़ें बड़ी मददगार हो सकती हैं इसमें. We have a sense of wonder in us. Always, बच्चों के अंदर बहुत होती है, धीरे धीरे हम बड़े होते हैं. Always appreciating. हमने अप्रिशिएट करना छोड़ दिया, भूल गए हैं हम अप्रिशिएट करना, जीवन को अप्रिशिएट नहीं कर पा रहे. तो इसलिए जो है सब जगह हमारा अप्रिशिएशन, हम खुद चाहते हैं कि हम हमेशा हमें अप्रिशिएशन मिले. अपना दिस हीरो वर्शिप, बहुत कुछ सीखना चाहते हैं अपने जीवन में, बहुत कुछ सीखना चाहते हैं. तो हमेशा हमें रहता है कि इसने मुझे कुछ और दिया था, सब दे रहा था. इसी तरह से there is a constant hero worship in us. जीवन में इतनी उमंग है, जीवन में इतना उत्सर्ग है, जीवन में इतना उत्साह. Psychic being is a seed of our soul. जन्मों जन्मांतरों के जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई शरीर छोड़ता है, जब कोई शरीर छोड़ता है तो उसके हमारे 3 कंपोनेंट्स हैं उसमें बॉडी के. एक कंपोनेंट है ये वाइटल का, जहाँ हमारी इमोशंस, फीलिंग, सेंटिमेंट्स जो रहती हैं, और दूसरा कंपोनेंट है जो बॉडी का, शरीर का. तीसरा है मेंटल कंपोनेंट. फिजिकल में डिसइंटेग्रेट हो जाता है. माइंड जो है माइंड मेंटल यूनिवर्स में चलना जाता है, और जो तंग करता है सबसे ज़्यादा, इसके लिए हम 13 दिन तक वो करते हैं, दैट इज अवर वाइटल पर्सनैलिटी. इमोशंस, फीलिंग्स, सेंटिमेंट्स, जेलसी, पता नहीं क्या कुछ जो है, उसको जो है वो सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट होता है उसको पास होना. तो ये सारे जो साइकिक बीइंग क्या करता है कि जो आपके पॉजिटिव एसेंशियल बीइंग के जो एक्सपीरियंसेस हैं, उनको एसेंस रूप में जो है वो कैरी करता है इन द नेक्स्ट बर्थ, और उसको नेक्स्ट बर्थ में कैरी करके फिर जो आपने देखा होगा, कोई एक बच्चा जो है बड़ा जीनियस बन जाता है, कोई एक बच्चा बड़ा डिफरेंट बन जाता है, किसी एक बच्चे में परमात्मा के प्रति लगन रहती है. सो वी कैरी दैट, और वो पंडित जी कुंडली बनाते हैं और बता देते हैं, देखिए ये बच्चा जो है ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा. सो वी कैरी दैट थ्रू द DNA एंड जीन्स ऑफ आवर पेरेंट्स. तो साइकिक बीइंग को कोई फॉर्म चाहिए ना, फॉर्म जो है वो DNA एंड जीन्स है हमारे. दो शब्द हैं. आगे इन्होंने लिखा है नैनम छिदंती शस्त्राणी. जो साइकिक बीइंग है वह हमारा देही एस्पेक्ट है, उसके बारे में लिखा है कि कंटिन्यू जो हमने बात की है, उसको कोई शस्त्र छीन नहीं सकता उसको, बिकॉज इट कंटिन्यूस. जिसको ये समझ में आ गया, 2nd अध्याय में जो है श्री कृष्ण उसको समझाते हैं अर्जुन को कि देखो यार, जिस देह की बात कर रहे हो ना, देह वाले मर जाएंगे, मेरे गुरु मर जाएंगे, वो कर जाएंगे, ये सिलसिला चलता रहता है. इसलिए देयर इज ए कंटिन्यूटी इन डे. जिसको ये बात नहीं समझ में आ गई, वो डे के जाने का शोक नहीं करेगा. उसको इस तरह से समझाते हैं. सो दैट दिस श्लोक हैज बीन टेकन फ्रॉम दैट नॉन-लैगिट्स. Normally when we talk about spirituality, we always talk about the very immediate aspect of it. Spirituality जो है in its wider sense, in its wide sense, is a process which goes beyond mind. Changes my being, and that contact changes my being, and when that my being changes, so I become a new person. So then spirituality happens. Till then, it's an exercise. It may help. Intellectual things can help. Ethical things can help. Emotional fervor can help.
but ultimately it's going beyond your immediate outer personality, and that force, when you come into contact with, and that influence of that force changes you, so then you become a universal spiritual person, and for the first time you realize that your relationship with the universe and your relationship with the cosmos is established. Only in spirituality it establishes. So that's why is the spirit of imperfection and limitation, and feels that there is something to be attained beyond what is now. It is one of the marvelous gifts of grace given to human nature. Only one doesn't know how to make use of it. What is the difference between desire and aspiration? Desire is a vital movement, aspiration is a psychic movement. And aspiration gives us a purpose of life. Love in aspiration gives itself entirely and asks nothing in return. It does not claim anything. This example can be taken to express the difference between desire in love and aspiration in love. Love in aspiration gives itself entirely and asks nothing in return. It doesn't claim anything. Whereas love in desire gives itself as little as possible, asks as much as possible. It pulls things to itself and always makes demands. An aspiration can give you joy, but a very special joy which has no excitement in it. Joy and excitement are two different experiences, so joy belongs to aspiration. When one, instead of seeing from the outside and seeking to see within, one is inside and one is within, absolutely everything changes completely. If one adds the complete faith and trust in the divine, it can become tremendous. For this realization, one must have a great purity and great intensity of one's self-giving. This is the crux. मुझे ऐसे लगता है कि सारी एस्पिरेशन का क्रक्स यही है. One must have a great purity and great intensity in one's self-giving. These are the two parameters, and these are the two movement. One has to be very, very pure, constant purity and intensity in self-giving, consecration. Avrittam jnanitin jnanino nitya varinam kanurupen kaunteya tuspuranam cha. The knowledge of even the most discerning gets covered by this perpetual enemy in the form of insatiable desires, which is never satisfied and burns like fire, O son of Kunti. बस करें? बहुत हो गया. And a warm welcome to Mrs. Pupinder Kaur, Principal Shivani Public School. Thank you so much, ma'am, for joining us. And thank you so much, sir, for your gentle message and enlightening us. कोटि कोटि
मानस तल पर उतरा तेरा स्वर्णिम प्रकाश, मन के मटमैले कक्ष ज्योति से निखर उठे, मानो सूरज ने उन्हें स्पर्श से दीप्त किया। उज्ज्वल उत्तर उस ज्ञान भूमि को जो अदृश्य विदूषित है, अब शांत ज्योति की शिखा मृदुल आभा उदार। स्वर्णलिका में उतरा तेरा स्वर्णिम प्रकाश, मेरी समस्त वाणी अब दिव्य विभासित है। तेरी महिमा तेरी स्तुति का आख्यान मधुर, अब एकमात्र गायन मेरा। अमरों की पीकर सुरा शब्द मदमस्त हुए, उतरा और अंतर में तेरा स्वर्णिम प्रकाश। अपनी अनंतता से तूने आक्रांत किया मेरे जीवन को, अब यह जीवन नहीं है भव्य मंदिर तेरा। आवेगों का अब एक लक्ष्य केवल तू है। चरणों तक आया उतर दिव्य स्वर्णिम प्रकाश, अब जो मिट्टी थी बनी वही आसन तेरा। तेरी क्रीड़ा का क्षेत्र दिव्य लीला प्रांगण। शून्य सन्नाटे टपकते जा रहे
set it free. If my love is insignificant, make it intense. If my feelings are ignorant and egoistic, give them the full consciousness and the truth, and the eye which demands this of thee. All violence to infinity, and in the perfect peace of that silence, thou appearest in the resplendent glory of thy light. All accept our little efforts in sharing our thoughts and understanding about receptivity through this poetic form. To be the storehouse, to be the swelling ground, to be the growing ground of that has been, of all there is about to be, the good and the bad. That's receptivity, that's exposure to rich and diverse learning experiences. We start on a journey of openness and receptivity, one day at a time. Timid, frightened, scared. Tiny steps we inch along. Removing the fears, reaching out, touching, until an impasse is removed. Running fast, arms outstretched, open wide the gates in both our hearts. The rightful, the beautiful, the bountiful. That's receptivity to, that's exposure to. Too deeper, too richer, too greater, too nobler. Learning experiences. Thank you. नवंबर सिद्धि दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह उन 4 दिनों में से एक है जब श्री अरविंद और श्री माँ अपने भक्तों को दर्शन दिया करते थे। आज जो कहानी हम आपको सुनाने जा रहे हैं वह एक सत्य घटना है। आइए सुनते हैं। मीनू सोलेना सत्य की खोज में भटकते हुए एक दिन दार्जिलिंग पहुंचे। इस पर्वतीय नगर में प्रातःकाल हिमालय का सुंदर दृश्य दिखाई देता है। 24 नवंबर के दिन वे लॉरेटो कॉन्वेंट देखने गए जहां श्री अरविंद बचपन में पढ़ते थे। वे उस समय 24 नवंबर के महत्व को नहीं जानते थे। उस दिन जब वह पहाड़ी रास्ते पर चल रहे थे कि उन्हें एक आकाशवाणी सुनाई दी, पौंडीचेरी जाओ। पूछताछ करने पर उन्हें पता चला कि पौंडीचेरी में श्री अरविंद का आश्रम है। उन्होंने आकाशवाणी के आदेश को ग्रहण किया और 21 फरवरी को जो माँ का जन्मदिन है वे मीनू पौंडीचेरी पहुंचे। अरविंद जी के समीप पहुंचे तो उन्होंने मन ही मन प्रार्थना की, श्री अरविंद, मैं आत्मोपलब्धि चाहता हूँ। यही वह समय था जब उन्हें पूर्ण ग्रहणशीलता का आभास हुआ, जैसे मानो वे भगवान के प्रेम को ग्रहण करने के लिए पूरी तरह से तैयार हो गए थे। उसी समय मीनू के हृदय से धम्म की आवाज हुई और कोई शक्ति वेग से उनके अंदर उतरने लगी, जिसको ग्रहण करते हुए उन्हें परम आनंद की प्राप्ति हुई। श्री अरविंद और श्री माँ की ओर देखते हुए उन्हें दिव्य शांति का अवतरण हुआ और जब वह दर्शन कक्ष से बाहर आने लगे उनके मुंह से अनायास ही निकला, कांचन जंगा। आइए अब यह ग्रहण कीजिए। हम ग्रहणशील हैं जब हमें देने की ललक का अनुभव हो और भागवत कार्य के लिए देने का आनंद आने लगे तो हम विश्वास कर सकते हैं कि हम ग्रहणशील हो गए हैं। ग्रहणशील होने के लिए क्या आवश्यक है? ग्रहणशील होने के लिए आवश्यक है कुछ देने की चाह। भगवान के कार्य के लिए तुम्हारे पास जो कुछ है, तुम जो कुछ हो, तुम जो कुछ करते हो, वह सब कुछ दे देने का आनंद। ग्रहणशील होने के लिए सच्चाई और नम्रता का होना बहुत आवश्यक है। The next question is, how can we increase receptivity? Answer is very simple, by progressing. In continuation to that, the sadhak asks, Mother, why can't I receive your love?
Give yourself. Making progress. Another petal in the symbol of progress. So, great going. Let us aspire to be receptive and then be progressive. जो उन्होंने मुझे ये मौका दिया उनसे जुड़ने का, और मैं दिल से सभी का धन्यवाद करती हूँ इतने सुंदर प्रेजेंटेशन के लिए। और मेरे पास शब्द नहीं है कहने के लिए। बच्चों ने, हमारे अध्यापकों ने और हमारे मेंबर्स ने जितना भी एफर्ट किया है, माँ की कृपा से, भगवान करे उनका आशीर्वाद सदा ही हम पे बना रहे। मैं सबका यहाँ आने के लिए दिल से आभारी हूँ, और इस बात के लिए भी कि मुझे माँ ने अपने चरणों में लिया। You are a wonderful audience. Once again, thanks to the hard work that all the team members have done. It has remained a pronounced pleasure